Sir, we're highly grateful for your contribution. Mr. Sehgal, we want to present swear you to the Principal Pakistan International School Al-Hassa. Now the Now we also request the chairman of Pakistan International School Al-Hassa to please come on the stage. Unfortunately, Mr. Saeed Alvi is not here, so his son, Maaz Alvi, will be presenting the souvenir to the Principal Pakistan. Guys, let's have a great round of applause for them. Now I would like to request the chairman Pakistan International School Al-Hassa and the principal to present the souvenir to our respected chief guest, Mr. Moinuddin, the link officer. Once again, give a big always dream and shoot higher than you know you can do. Not bother just to be better than your contemporaries or predecessors. Try better than yourself. The person who had a great fame in his lifetime are considered the living legend because strong lives are motivated by dynamic purposes. Now, gentlemen, we really got this kind of opportunity to listen few words of inspiration about your personality, Mr. Moinuddin. Now, I request the principal and the chairman to be seated, and I would like to call our honorable chief guest to please come on the dais and share his views with us. Audience, for your standing ovation, a big round of applause. Chairman, Chief Fazl Malik Sahab, Principal Sir Professor Mushtaq Ahmed Khan Sahab, Dr. Dawood Sahab, Kamal Nasir Sahab, हमारे मोहतरम चौधरी नियाज साहब, सारे स्टाफ मेंबर्स और बच्चों के पेरेंट्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द स्टूडेंट्स themselves, अस्सलाम वालेकुम। बिलीव मी, मतलब आज की ये जो रिमार्क्स मैंने लगा हूँ, ये परफॉर्मल स्पीच नहीं है एट द एंड ऑफ द सेरेमनी। Whatever I'm going to say, I'm going to say it from the core of my heart. It has given me immense pleasure. Immense, I hope I would have used a more powerful adjective than this. It has given me an immense pleasure to be a part of your annual day function, and which has incidentally coincided with your silver jubilee of your school. I congratulate the school management, staff, parents and students on your silver jubilee. Beautiful performances performed by little flowers, as somebody remarked, has time and again reminded me of a beautiful poem which we used to read when we were teachers, when we were students, and that poem was of William Wordsworth. A thing of beauty is a joy forever. So what I have seen today has been things of beauty, believe you me,
परफॉर्मेंस पे, इतनी अच्छी शाम को ऑर्गेनाइज करने में, especially the tableaux and the Kirat and all the performances, mashallah, were very impressive. God bless you. मुझे आपके gesture ने भी बड़ा मुतासिर किया. I was very touched by your touching gesture that you have dedicated the entire event to the martyrs of our Peshawar tragedy. Let us all pray that may Allah Almighty rest those innocent souls in eternal peace forever. And this gesture of yours is a very touching gesture, and I assure you that मैं एम्बेसी की तरफ से इंशाल्लाह ताला पेशावर पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल को फ़ोन करके आपके इस जेस्चर को कन्वे करूँगा वहाँ. मैं बताना चाह रहा था फजल साहब को भी, अभी चाय में दोस्तों से बात कर रहा था कि वी वर प्लानिंग अबाउट द एनुअल फंक्शन ऑफ कोबर स्कूल. जब एम्बेसडर आए थे यहाँ पे तो नियाज साहब की ऑलरेडी दावत आई हुई थी 8 तारीख की, तो चूँकि एम्बेसडर आने थे तो हमने उनको डिले किया. हमने कहा कि एम्बेसडर शुड बी पार्ट ऑफ दैट. मीनवाइल मुझे मतलब फजल साहब की भी फैक्ट्स मिली 15 तारीख की, व्हेन वी वर ऑल सेट टू गो फॉर कोबर स्कूल. तो मैंने फिर एम्बेसडर को अपनी जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था वेलफेयर विंग के हेड के कैपेसिटी में, तो आई सजेस्टेड कि सिंस यू विल बी इन द एरिया, उन्होंने अपना 15 तारीख को रखा है, वो 17 को आप जा रहे हैं, तो अगर आप मुनासिब समझें तो मैं फजल मलिक साहब से बात कर लूँ, एंड इफ इट इज़ फीजिबल फॉर देम टू एक्सटेंड इट और पोस्टपोन इट फॉर 2 days. 17 को चूँकि आज गर्ल्स सेक्शन में फंक्शन है वहाँ पे, तो 17 को अगर दिन को हम वहाँ पे रख लें तो एम्बेसडर वॉज वेरी काइंड इनफ. उन्होंने कहा कि डेफिनेटली आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दैट इवेंट, जो फिर हमने 17 को किया. और ही वॉज नॉट सेट टू कम, यहाँ पे वो आना चाहते थे. हमने एक सजेस्ट की थी कि कम्युनिटी के जो हमारे सीधा लोग हैं, जिन दोस्तों से मेरी भी 12 मुलाकात हुई है, तो मेरा दिल था कि एम्बेसडर क्योंकि पहली दफ़ा आ रहे हैं तो आप सबसे एक इंट्रोडक्टरी मुलाकात भी हो जाती. लेकिन वो कहते हैं कि मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस. तो कुछ अनफोर्चुनेट इंगेजमेंट इस तरह की आई, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर की अचानक विजिट के हवाले से. He had to be with him in Riyadh, and then he also went with him to Jeddah and Medina. तो आज सुबह ही प्राइम मिनिस्टर डिपार्ट किए हैं पाकिस्तान के लिए. तो उन्होंने मुझे स्पेशली अभी जब हम रास्ते में आ रहे थे, मैं और नियाज साहब जब भी उनसे फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने मुझे स्पेशल हिदायत की कि मैं उनके बेस्ट विशेज़ के पैगाम आपको पहुँचाऊँ, और उनका ये भी पैगाम पहुँचाऊँ कि एम्बेसी इंशाअल्लाह ताला जिस हद तक जा सकती है पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल्स इन जनरल एंड पर्टिकुलरली आज आपके हवाले से, इंशाअल्लाह वी विल प्रोवाइड एंड विल बी ऑन द फ्रंट रैंक्स इंशाअल्लाह ताला टू प्रोवाइड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड. साथ ही मैं अपनी तरफ से तो ये प्रॉमिस कर देता हूँ और अपना एम्बेसडर को मैं इम्प्रेस अपॉन करूँगा कि जुबैल का फंक्शन अभी हमने थोड़ा सा लेट रखा है, विल बी इंशाल्लाह इन द फर्स्ट 10 days ऑफ फरवरी नेक्स्ट मंथ. जब हम जुबैल के लिए जा रहे होंगे तो आई विल मेक श्योर इंशाल्लाह, मैं ये सजेस्ट करूँगा एम्बेसडर के शेड्यूल में लाने के लिए कि बेशक वो अपना आधे पौने घंटे की या 1 घंटे की यहाँ पे विजिट करें आने पे, जिसमें वो कुछ वक्त स्कूल में भी गुजारें और लंच वगैरह भी कम्युनिटी के साथ अगर हो सके. तो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी तरफ से तो ये प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि ही कम्स हियर. I have always believed that the success of the student, success of any educational institution is a result of the teamwork. The teamwork between 3 most important stakeholders. मैं बता रहा था कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो आपके स्टूडेंट्स हैं. स्टूडेंट्स से, बच्चों से जिन्होंने माशाल्लाह आज अच्छा परफॉर्म किया है, हम होप दैट दे आर अप टू द मार्क. लेकिन उनसे यही हमेशा तवक्को की जाती है बड़ों की तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती हैं, जो भी माहौल उनको कंडीशन प्रोवाइड किया जाता है, दे शुड मेक बेस्ट यूज़ ऑफ दैट और अपना दिलो जान से काम करें. क्योंकि मतलब ये वक्त है जब हम भी स्टूडेंट थे तो वी आल्सो यूज टू टेक थिंग्स अ बिट केयरलेसली.
کبھی بندہ اس پہ بھی چلا جاتا ہے. وہ ایج اس طرح کی ہوتی ہے, لیکن دس از دی ایج which can make or break your career. کامیابی اور ناکامی میں سب سے بڑا فرق جو ہے وہ فرق ہے ہی اچھی تعلیم اور بری تعلیم کا. تو جو اچھی تعلیم کی اپرچونیٹی کو اویل کر جاتا ہے, اس وقت کو صحیح یوٹیلائز کر جاتا ہے, انہیں کو پھر یہ ڈائز نصیب ہوتے ہیں. تو ٹرائی ٹو میک بیسٹ آف your provided by your parents and the efforts which are being put in by your teachers. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کوششوں میں کامیابی نصیب کرے. اور ٹیچرز کے حوالے سے یہی ہے کہ جی آپ ملک کا مستقبل سنوار رہے ہیں, بلکہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں ایک اور بھی ذمہ داری جو ان پہ عائد ہوتی ہے اس کو بھی ذرا پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ یہ جو بچے ہمارے یہاں پہ سعودی عرب میں پڑھ رہے ہیں, you are going to serve as the bridge between the two countries, between the two communities, ماشاءاللہ. کیونکہ بائی برتھ کافی بچے یہاں کے ہیں, کچھ پاکستان کے ہیں, لیکن آپ کا براٹ اپ یہاں پہ ہو رہا ہے, سعودی عرب میں ہو رہا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہماری برادرلی ٹائز ہیں سعودی عرب کے ساتھ, ہم جو میں بلیو کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو بچے یہاں کے اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو دے ول گرو اپ اینڈ ان شاء اللہ سرو ایز اے برج بٹوین دا ٹو کنٹریز, اور یہ ٹائز اور مضبوط آپ لوگ کریں گے. ٹیچرس کے حوالے سے یہی ہے کہ آپ مستقبل کے معمار جس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ ہیں, یو آر بلڈنگ اوور فیوچر. تو آپ پہ جتنی بڑی ذمہ داری ہے شاید ہی کسی اور پروفیشن پہ آتی ہو. آئی ہوپ کہ آپ ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہیں. پیرنٹس کے حوالے سے, اب چونکہ ہم خود بھی پیرنٹس ہیں, اور مطلب جب کہتے ہیں کہ where to walk where the shoe pinches, جب آپ اس پوزیشن میں آتے ہیں then you realize کہ مطلب what does it mean to be a parent. آپ مطلب پھر وہ اپنے لیے سوچنا چھوڑ دیتے ہیں. You start thinking of your future, you start thinking about your present in terms of your children. تو پیرنٹس کے لیے تو کچھ کہنا ہی مطلب وہ ہے, لیکن جس طرح پروفیسر مشتاق نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اگر کہیں پہ کہیں وہ لیکنگ ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے مہینے کی فیس جمع کرا دی اور رپورٹ کارڈ پہ سائن کر دیا تو آپ کو ذمہ ہوگی. آئی وڈ ریکویسٹ خاص درخواست ہوگی پیرنٹس سے کہ دے شوڈ بی مور پرویکٹیو, اپنے بچوں کے بارے میں جتنا بھی زیادہ فیڈ بیک لے سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی فیڈ بیک جو ہے اٹ پٹس لاٹ آف پریشر آن دی ٹیچنگ اسٹاف, اسکول پہ بھی, آپ کی آبزرویشنس بھی. کیونکہ مطلب جو بچے اچھا کر رہے ہوں وہ تو سب کو پتہ چل جاتا ہے, جو اچھا نہیں کر رہے ہوتے وہ پھر اپنے پیرنٹس سے بھی چھپا رہے ہوتے ہیں. تو بیسٹ وے از ٹو بی ان کوآرڈینیشن ود دی ٹیچنگ اسٹاف آف دی اسکول. تو جو بیسٹ انویسٹمنٹ ہے آپ کی, آپ بے شک 10 بنگلورز 10 گلاس خرید لیں, لیکن اگر آپ کا بیٹا جو آپ کی فیوچر ہے, آپ کی بیٹی جو آپ کا فیوچر ہے, میرا تو خیال ہے کہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ آپ کی وہی ہونی چاہیے اور اسی میں ہونی چاہیے. اس موقع پہ میں ان تمام اسٹوڈنٹس کو, سارے اسٹیک ہولڈرز, جو 3 بڑے اسٹیک ہولڈرز جن کا میں نے ذکر کیا, پیرنٹس کو جن سے بچوں نے آج لیے ہے اپنا پرائز لیے ہیں اسپورٹس میں یا اکیڈمکس میں ان کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج پرائزز لیے ہیں اور جنہوں نے پرفارم کیا ہے, اور ان ٹیچرز ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ آ کے اپنی سروسز کی ریکگنیشن میں ہم سے پرائزز بھی لیے ہیں. اور میں ملک صاحب کو کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا آپ ہی ذرا آپ کی طرف سے میں اناؤنس کر دیتا ہوں. مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی ان ٹیچر سے مل کے, those who have given 100% results and those who have been regular on 100% basis. تو میں نے ملک صاحب کو کہا ہے کہ 500 پر ٹیچر جو ہے وہ میں ان کی طرف سے اناؤنس کرتا ہوں. ملک صاحب کے دینے بھی ہیں. اور لیڈی ٹیچر جو ہماری بہنیں جنہوں نے اسی طرح اچھا پرفارم کیا گرل سیکشن میں, ہماری ان ٹیچر بہنوں کے لیے بھی یہی فائنینشیل پرائز میری طرف سے. سارے بچے ماشاءاللہ جنہوں نے پرفارم کیا, جنہوں نے پرائز کیا, دے آر آل امپریسو ماشاءاللہ, ویری ویل ڈن. طلال has especially impressed us بھی ماشاءاللہ. He has done
वेरी वेल. मुझे तो बता रहा था कि किरण फर्स्ट पोजीशन इन कंपटीशन कुरान फहमी, उसमें भी माशाल्लाह ही स्कोर्ड थर्ड. इंग्लिश स्पीच which has not been my cup of tea at least, उसमें भी फर्स्ट प्राइज माशाल्लाह अल्लाह. एंड who is my third position? You are an all-rounder. तो हमारे भाई बड़े अच्छे भाई हैं अजहर इकबाल साहब, उनकी तरफ से मैं अनाउंस करता हूँ कि हर महीने एक साल अगले साल के लिए हर महीने 200 रियाल स्कॉलरशिप अजहर साहब की तरफ से मैं अनाउंस करता हूँ. तो जिस स्टेक होल्डर और टीम वर्क की मैं बात कर रहा था, माशाल्लाह आज का फंक्शन जो आप लोग माशाल्लाह कर रहे हैं, लग रहा है कि पेरेंट्स की बड़ी कोऑर्डिनेशन है. लेकिन हैविंग सेड दैट हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है. उस सिलसिले में मैं मलक साहब को भी, मुश्ताक साहब को भी और आप सब दोस्तों को भी, जब व्हेनेवर यू फील लाइक एड्रेसिंग है, हमारी ऑफिस के दरवाजे, दिलों के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं. व्हेनेवर यू फील लाइक कोई भी चीज़ हमारी नॉलेज में लाने से कोई बेहतरी आ सकती है, तो यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम. तो दो वन प्राइज टुडे बच्चों के लिए कि मतलब कंप्लीसेंट नहीं होना. जिन्होंने, मैं दोस्तों को कह रहा था जो मुझसे ट्रॉफी ले रहे थे, मैं उनसे प्रॉमिस ले रहा था कि अगले दफे इससे बड़ी ट्रॉफी लेनी है. एंड दोज हु कुड नॉट विन प्राइजेस टुडे, उनके लिए यही है कि मतलब ओवर एफर्ट करें, डू नॉट फील देमसेल्व्स एज फेल्यूर. कभी कभी मतलब चैलेंजेस आते हैं, वक्त इतना मुवाफिक नहीं होता, क्योंकि ये बात मुखालिफ जो चलती है ना, उससे घबराना नहीं है, ठीक है ना. वो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना ही जो है वो अजीम आदमी का काम है. अगर आप समझते हैं कि कोई मुश्किलात हैं, यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, पुट इन योर बेस्ट एफर्ट और कोशिश करें. कीप योर फेस हाई, चेस्ट अपनी बाहर रखें, कभी सर झुकाने की जरूरत नहीं है. एंड इंशाल्लाह इफ यू कीप ऑन एंटरिंग, नेक्स्ट सक्सेस विल बी योर्स इंशाल्लाह. नेक्स्ट टाइम जब इंशाल्लाह इधर आए तो जिन बच्चों ने नहीं लिया, आई विश के वो स्टेज पे आके हमसे प्राइज ले रहे हों इंशाल्लाह. I wish you all the best. Thank you very much for inviting me. I wish के एम्बेसडर साहब खुद भी इधर होते और उनके जो बेस्ट विशेस थे ख्यालात को मैंने आप तक पहुँचाए हैं. अल्लाह ताला स्कूल को भी तरक्की दे. एक इशू जो आपने हाईलाइट किया था लैंड का, वो बिलीव करें कि मतलब हमारा भी बड़ा चेरिश्ड गोल है कि मतलब पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल की अपनी बिल्डिंग्स हों, बड़ी खूबसूरत इमारत हों, कि मतलब जाते हुए बाकी कम्युनिटी के लोग भी कहें कि ये पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल की बिल्डिंग है. तो इंशाअल्लाह ताला उसमें मैं एक अच्छी खबर ये है कि उसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है लैंड के हवाले से. मैं मलिक साहब से गुजारिश करूँगा कि अगले 10-15 दिनों में उनकी तरफ से भी और जो कम्युनिटी के लोग जो उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप 7-8 बंदों का डेलीगेशन आए, मुझसे मिले, एम्बेसडर से भी हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह. तो मीनवाइल अगर आप समझते हैं कि मतलब कोई इस तरह का पीस ऑफ लैंड है which can be utilized, तो उसको आप एयरमार्क कर लें अभी से ही. इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी खुशखबरी जो है इस हवाले से. जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस फंक्शन के लिए बहुत मेहनत की है, प्रेजेंटेशंस के लिए, डेकोरेशंस के लिए, सब टीचर ने भी बहुत मेहनत की है. तो कम से कम 3 दिन पीछे कहते हैं ना कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, वो हम लोग छुट्टी उसकी न हुई जिसने सबक याद किया. तो आई हैव अनाउंस विद द परमिशन ऑफ फजल माहिर साहब कि आप कोऑर्डिनेट कीजिएगा कंसर्न एजुकेशन अथॉरिटी के साथ, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको 2 दिन की छुट्टी दें. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू.
I wish you all the best. ہماری دعائیں، ہماری ایفرٹس، ہماری سارا تعاون انشاءاللہ آپ کی ہوگا. چلیے اگر پاسبل ہو سکے تو میں آئی اناؤنس 3 days ہالیڈے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب لوگوں کا ہم سب کا مناسب ہو. بہت شکریہ. Thank you very much, sir. Please give a big round. Sir, you would like to have a picture with you. Sir, would like to have a picture with you. نہیں یار کیا کریں تو توڑ دے گئے. چیف گیسٹ ابھی جا رہے ہیں لیکن ہمارا فنکشن جو ہے تو یہ کنٹینیو رہے گا. اور ابھی جو انہوں نے فرمایا بچوں کو میں نے کہا ہے کہ اگلے سال اس سے بڑی ٹرافی لینا. تو اس سلسلے میں اظہر صاحب کے نام سے انہوں نے اناؤنس کی ہیں 2 ٹرافیاں یہ بنا کے دیں گے بڑی بڑی. وہ مختلف جو ہمارے کمپٹیشنز ہیں ان کے لیے انہوں نے اناؤنس کی ہیں. یہ اپنے نام سے کی ہوں گی اظہر صاحب کے نام سے. تھینک یو. اب جب کپ آنے یہ شور مینٹین کرا بول دی کپ آئیں گے تو اسی طرح لگے ہفتہ بن تھا ویسے ہفتہ بولے پہلے بولے میں زیادہ ہفتے کی کچھ اور فرمانے لگے. ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ جناب چیف گیسٹ نے جتنے بچوں نے بھی آج حصہ لیا ہے جس ایونٹ میں بھی ان سب کے لیے پر ہیڈ 100 ریال. مبارک ہو بھی یہ ایک اناؤنسمنٹ سلیم صاحب کی طرف سے کہ جتنے بھی پانی کے 4-5 کولر ہیں وہ نئے لگا دیں گے. ہیڈ کو ملنا ہے, ہیڈ کو 100 ملنا ہے پر ہیڈ کو جس نے ہیڈ کیا ٹیم کو. نہیں یار سب کو میرا بھی سو رہے ہو بتا دیا پر اگر اس چیز میں گولڈن فوڈ کہہ رہے ہیں گولڈن فوڈ وہ نہیں اب کم سے کم بچوں کو ملیں گے یار ہمیں. اور نہیں ابھی جو اسپیچ کی ہے اور وہ سارے لیول پہ نہیں ہے. میری نعت اور میری دعا میری تیری بلا
थोड़ी रह गई है 30%।